Mitosis. It is a type of cell division in which a single diploid cell it divides into two daughter cells having the same chromosome number as that of the parent cell. उसे हम कहते हैं mitosis. Suppose this one is the diploid cell having the chromosome number, suppose 2n is equal to 4. When this diploid cell undergo the mitosis division, it divides into two daughter cell having the same chromosome number as that of the parent cell. This one is parent cell, these two are the daughter cell. When the parent cell undergo the mitosis, it divides into two daughter cell, and these two daughter cells having the same chromosome number as that of their parent cell. So इसीलिए mitosis को हम कहते हैं equational division, because the daughter cells having the same chromosome number as that of their parent cell. Therefore, this mitosis is known as the equational division. क्या mitosis सिर्फ diploid cell में होती है? नहीं. Mitosis can occur in haploid cell as well. For the formation of different types of gametes in algae as well as in fungus, the mitosis division occurs in their haploid cell, as well as to produce the different types of asexual spores in algae and fungus. The mitosis division occurs in their haploid cell. Okay. In case of higher eukaryotes like the human being and other higher animals, mitosis occur in diploid cell, and in haploid cell mitosis cannot be seen in higher animals. तो ये point आपको याद रखने हैं. Then when this haploid cell undergo mitosis division for lower organism, it divides into two similar identical daughter cells having the same chromosome number as that of the parent cell. So ये था माइटोसिस. इसे हम इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहते हैं इसके बारे में. तो माइटोसिस हम कैसे स्टडी करेंगे. दिस माइटोसिस on the basis of the type of the division that occur during the mitosis in the nucleus and cytoplasm. This mitosis cell division, it is divided into two different phases, that is karyokinesis and the cytokinesis. But the cell that entering into the mitosis, it having the chromosome number similar, but there is doubling of the DNA occurs. DNA doubling क्यों जरूरी है? Why the DNA quantity becomes double? Because if the DNA quantity is not double, then after the division of the parent cell, the genetic material cannot be distributed equally in their daughter cell. Therefore, the genetic material must have to be double. So suppose this one is the cell, diploid cell having the chromosome number 2n is equal to 4. Then the chromosome number is 4, but the DNA content is 2C. Okay, then 2C, it is the concentration of the DNA. When this cell entering into the dividing stage, it pass through the interphases. Interphase is consist of G1S and G2. Okay, this G1 is the first gap phase, G2 is the second gap phase. In both these gap phase, the synthesis of RNA and protein and enzymes occur. But in case of S phase को हम synthesis phase कहते हैं, जिसमें DNA का replication होकर डुप्लीकेट कॉपी फॉर्म होती है डीएनए की. सपोज यहाँ पर ये क्रोमोसोम है, ओके, सिंगल क्रोमोसोम ऐसे है. आफ्टर एस फेज दिस क्रोमोसोम इट फॉर्म इट्स डुप्लीकेट कॉपी, एंड दीज टू स्ट्रैंड्स आर नोन एज द सिस्टर क्रोमैटिड्स. इन दोनों स्ट्रैंड को सिस्टर क्रोमैटिड कहेंगे. हियर दिस क्रोमैटिड ऑफ दिस क्रोमोसोम इज सिंगल, बट आफ्टर एस फेज इट बिकम्स डबल, having the identical gene in both the sister chromatids. The chromatids of the same chromosome is known as the sister chromatid. Okay, so every cell that entering into the M phase or dividing phase, that their genetic constituent, that is the DNA, must have to be double for the equal distribution of the DNA contained in the daughter cell. इसीलिए यहाँ पर S phase में DNA का डुप्लीकेशन होना, ओके, साथ ही साथ सेंट्रोसोम्स का भी डुप्लीकेशन होना यहाँ पर जरूरी है. ओके, सो ये बात होती है. बिफोर इंटरिंग एनी सेल इंटरिंग इनटू द एम फेज, देयर डीएनए कंस्टिट्यूएंट, द सेंट्रोसोम कंस्टिट्यूएंट इन एनिमल सेल, इट बिकम्स डबल इन एस फेज. तो ये था माइटोसिस में इंटर होने वाली सेल के बारे में. ओके, देन सेकेंड वन, mitosis can be divided into two different phases on the basis of
which part of the cell undergo the division? Firstly, the nucleus undergo the division that is known as the karyokinesis. Then later on, the equal distribution of the chromosome and genetic material occur, that is the cytokinesis. Hence, we can say mitosis complete in karyokinesis and cytokinesis. Then karyokinesis. Karyokinesis क्या होता है? This karyokinesis, it is the division of the nucleus, and cytokinesis, it is the division of the cytoplasm. Then this karyokinesis divided into 4 different phases on the basis of the movement of the chromosome and organization of the chromosome and their movement. On the basis of this, karyokinesis divided into prophase, metaphase, anaphase, and the telophase. Then now we are going to discuss about this prophase, metaphase, anaphase, telophase, as well as cytokinesis. Okay, let us discuss about the first phase, prophase. The characteristic of prophase is no doubt the early prophase, it has the nuclear membrane as well as nucleolus present, and the chromosomes, they are present in the form of thread-like structure, and these thread-like structures are known as the chromatin. इसे हम chromatin कहते हैं. But in late prophase, the nuclear membrane, it start to disappear, as well as the chromosome, they start to condense like these. Okay, then that is the late prophase, as well as the nucleolus, it also get disappear. Now the centrosomes यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है. The centrosomes, they get separate at opposite pole. So that is the general characteristic of the prophase stage. Now, what is the chromosome number of these prophase, late prophase? The 2n number, that is the diploid chromosome number, is 4. DNA content is, that is the 4C. Okay, 4C. Then number of chromatid, if we are counting here, the number of chromatid are 8. Okay, then what about metaphase? Now during this early metaphase, the synthesis of the chromatid, that is the, we can say the spindle fibers occur. The spindle fiber is consist of the protein known as the tubulin protein. These centrosome, they start to form the spindle fibers, and these spindle fibers, there are 2 different types. When this spindle fiber, they originate from centrosome and binds with the kinetochore. Now we know that the chromosome, the centromere of the chromosome has a disc-like protein. That disc-like protein is known as the kinetochore. उसे हम kinetochore कहते हैं, आपको पता है. Now this centrosome, centromere of the chromosome, it has the disc-like protein. That disc-like protein is known as the kinetochore. Now this one is the kinetochore, and each of these kinetochore is bind with the spindle fiber. Now these red color part are the spindle fiber. They bind with the respective kinetochores, and after this binding, all these chromosomes, they are lie in single plate, that is known as metaphasic plate, or it is also known as the meta equatorial plate. Okay, इसे equatorial plate या फिर metaphasic plate कहा जाता है. The characteristic of metaphase is all the chromosomes, they lie in the middle of the cell with the help of the spindle fibers that originate from the centrosome. Centrosome से जो spindle fiber origin होते हैं, वो इस काइनेटोकोर के साथ बाइंड होते हैं, और इन काइनेटोकोर को बाइंड होने के बाद सभी क्रोमोसोम्स को ये मूव करते हैं मिडल ऑफ द सेल, और सारे क्रोमोसोम ये एक लाइन में, एक प्लेट में यहाँ पर अरेंज होते हैं. इसे हम मेटाफेजिक प्लेट या फिर इक्वेटोरियल प्लेट कहते हैं. Okay, now you can see here only the spindle fibers which attach with the kinetochore, but another type of spindle fiber is present that extend from one pole to the another pole. That spindle fiber is known as non-chromosomal spindle fiber, or it is also known as the continuous spindle fibers. These continuous spindle fiber, they extend from one centrosome to the another end centrosome. सो ये है मेटाफेज के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक. और दूसरी एक बात आपको बता दे, if we want to study the structure of the chromosome, shape of the chromosome, size of the chromosome, etc., general characteristic of the chromosome, then we have to consider the metaphase only.
तब हमें सिर्फ मेटाफेज जो है इस मेटाफेज को कंसिडर करना होता है। Why we have to consider the metaphase? Because the chromosome it attain the high its configuration, the highest coiling and supercoiling of the chromosome it occurs in the metaphase. Therefore, for studying the structure, shape, size and type of the chromosomes, we have to observe the cell under the compound microscope in metaphase stage. Metaphase stage बहुत ही जरूरी है किसी क्रोमोसोम की स्टडी करने के लिए, क्योंकि क्रोमोसोम का जो सबसे हाईएस्ट कॉन्फ़िगरेशन कॉइलिंग और सुपर कॉइलिंग होता है ये मेटाफेज स्टेज में ही होता है। ओके, इन मेटाफेज स्टेज द क्रोमोसोम्स दे आर हाईली कंडेंस। इस मेटाफेज स्टेज में ही क्रोमोसोम जो होते हैं वो हाईली कंडेंस होते हैं, और इसी वजह से मेटाफेज जो है यहाँ पर क्रोमोसोम क्लियरली ऑब्जर्व होते हैं, और इसी वजह से मेटाफेज में हम क्रोमोसोम के जो कैरेक्टरिस्टिक है उनका टाइप है, शेप, साइज, स्ट्रक्चर, पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर, ये सारे पॉइंट हम मेटाफेज में स्टडी करते हैं। आगे जाकर एक पॉइंट आने वाला है कैरियोटाइप। ओके, कैरियोटाइप, व्हाट इज मीन बाय कैरियोटाइप? Karyotype का मतलब होता है the study of group characteristic of the chromosome is known as karyotype study, and this karyotype it can be studied in metaphase stage। ये karyotype की जो study है ये मेटाफेज स्टेज में की जाती है, क्योंकि मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये हाईली कंडेंस होते हैं, क्लियरली ऑब्जर्व हो सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन इज द एनाफेज स्टेज। अब ये जो दैट इज स्पिंडल फाइबर, क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर जो काइनेटोकोर से यहाँ पर जुड़े हैं, these chromosomal spindle fiber they pull these chromatid, the sister chromatids of the chromosome in opposite direction. This spindle fiber it pull the sister chromatid towards this pole, while this spindle fiber it move the chromosome in opposite pole. In this way the longitudinal splitting of each chromosome occurs। longitudinal splitting का मतलब होता है the splitting of chromosome along the metaphasic plate, इसे हम longitudinal splitting कहते हैं। तो ये longitudinal splitting it occurs in the anaphase stage। तो ये anaphase में देखिए, after longitudinal splitting, after longitudinal splitting all these single chromosome they splits into the daughter chromosomes। Now after splitting, now suppose this one is the chromosome, जैसे कि अभी हमने देखा तो ये क्रोमोसोम है। ओके, और इस क्रोमोसोम का यहाँ पर लॉन्जिट्यूडिनल स्प्लिटिंग हो रहा है। लॉन्जिट्यूडिनल स्प्लिटिंग मींस द स्प्लिटिंग along the splitting along the इक्विटोरियल प्लेट, स्प्लिटिंग अलोंग द इक्विटोरियल प्लेट, इसे हम कहते हैं लॉन्जिट्यूडिनल स्प्लिटिंग। और ये स्प्लिट होने के बाद ये जो पार्ट है क्रोमोसोम का, दिस पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम दैट इज सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ दिस क्रोमोसोम it gets split and moved in this pole here at this pole, and the second chromatid of this chromosome it gets split and move towards the opposite pole here। ओके, सो ये जो क्रोमोसोम है ये दोनों के दोनों एक दूसरे के डॉटर क्रोमोसोम है, मगर ये दोनों इस जगह पर एक दूसरे के सिस्टर क्रोमैटिड थे। मगर जब इनका यहाँ से स्प्लिटिंग हो जाता है तब ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड को हम एक दूसरे के डॉटर क्रोमोसोम्स कहेंगे। These are the daughter chromosomes। Now how many daughter chromosomes form here? Before this, please tell me the what is the chromosome number? Okay, what is the chromosome number in metaphase stage? Now here the 2n is equal to 4, यहाँ पर 2n is equal to 4 है। okay, यहाँ पर 2n is equal to कितना है? 4 है। then number of the quantity of the DNA is the 4c। and what about the chromatid? number of chromatid is 8 in numbers। okay, 8 in numbers, 8 है यहाँ पर chromatids का नंबर। ठीक है, then after metaphase sorry in anaphase, अब इस एनाफेज में क्रोमोसोम का लॉन्जिट्यूडिनल स्प्लिटिंग होने के बाद
क्या आप बता सकते हो यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा, यहाँ नंबर ऑफ क्रोमेटिड कितने होंगे, और यहाँ डीएनए कंटेंट क्या होगा? द डीएनए कॉन्सेंट्रेशन रिमेन 4C, बट द क्रोमोसोम नंबर हियर इज 8। यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर हो जाता है 8। ओके, और दैट इज द क्रोमोसोम नंबर पहले कितना था, 2n इज इक्वल टू 4। ओके, अर्लियर वी स्टार्टेड विद द क्रोमोसोम नंबर 4, but now here in anaphase the chromosome number becomes double, that is the chromosome number becomes 8 here. The number of chromatids here, the chromosome number is 8, sorry, the chromosome number of the cell is 8. Then how many number of chromatid present here? The number of chromosome as well as number of chromatid is similar in anaphase stage of the mitosis. Okay, hence we can say that the chromosome number becomes double in anaphase during mitosis stage. ये बात याद रखिए आप, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्रोमोसोम का लॉन्जिट्यूडिनल स्प्लिटिंग होकर डॉटर क्रोमोसोम्स फॉर्म होते हैं, और ये डॉटर क्रोमोसोम अपोजिट पोल पर पूल किए जाते हैं। ये स्टेज एनाफेज होती है। एना मीन्स दैट इज अवे फ्रॉम, मूव टुवर्ड्स द पोल। देन नेक्स्ट वन अगला पॉइंट ऐसे है, एक कॉल्चिसिन नाम का एक स्पिंडल फाइबर पॉइजन होता है। अगर हम इस तरह के, अगर हम माइटोटिकली डिवाइड होने वाले सेल को कॉल्चिसिन की अगर ट्रीटमेंट देते हैं, द कॉल्चिसिन इज नोन एज स्पिंडल फाइबर पॉइजन। वो कॉल्चिसिन इस स्पिंडल फाइबर को ब्रेक डाउन कर देता है, और इस स्पिंडल फाइबर का अगर ब्रेक डाउन हो जाएगा तो ऑल दीज डॉटर क्रोमोसोम्स, they does not able to get separate at opposite pole, and after this the next stage of anaphase is, after to the next phase to this anaphase is telophase, and telophase cannot be seen. ओके, तो यहाँ पर अगर कॉल्चिसिन की ट्रीटमेंट अगर दी जाती है माइटोटिकली डिवाइड होने वाले सेल को, और वो कॉल्चिसिन अगर इस एनाफेज में इफेक्ट करेगा तो ये स्पिंडल फाइबर को ब्रेक डाउन कर देगा, और जिस वजह से ये जो सेल है वो पॉलीप्लॉइड सेल कहलाएगी। दैट इज, जो सेल डिप्लॉइड थी इट बिकम्स टेट्राप्लॉइड, दैट इज 4n। ओके, 4n दैट इज टेट्राप्लॉइड। ओके, यहाँ पर 2n means that is the diploid chromosome number we have taken here the 4। okay, its haploid chromosome number क्या होगा, and single set of chromosome का number क्या होगा फिर 2। the single set of chromosome contain the 2 chromosome, 2 sets of chromosome contain 4 chromosome, 3 sets of chromosome contain 6 chromosome, and 4 set of chromosome contain 8 chromosome। now the this cell becomes tetraploid। ये सेल जो है इसका इसका जो प्लॉइडी नंबर है, सेट ऑफ क्रोमोसोम का नंबर है, ये 4 मल्टीपल में, 4 के मल्टीपल में ये डबल हो रही है। सो इसे हम कहेंगे दैट इज टेट्राप्लॉइड सेल हियर, दैट इज नोन एज द पॉलीप्लॉइडी। इसे हम कहते हैं पॉलीप्लॉइडी। ओके, तो आपको ये समझ में आया होगा कि यहाँ पर जो एनाफेज स्टेज है, इस एनाफेज स्टेज में क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाता है। ओके, then we are discussing about the normal mitosis, therefore we consider here the diploid chromosome number. Now it becomes the double here, the chromosome number becomes 8 here. Okay, then after this anaphase, when these two daughter, the set of daughter chromosome, the singles here, the two sets of daughter chromosome present here. Okay, one set is here and another set is here, then these two set of chromosome they get pulled toward the opposite pole in anaphase. After complete after complete uh, after complete pulling or the separation at opposite pole, सेपरेशन हो जाने के बाद, कंप्लीट सेपरेशन हो जाने के बाद, जब ये डॉटर क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल पर इकट्ठे हो जाते हैं, 4 क्रोमोसोम हियर, फोर डॉटर क्रोमोसोम हियर, देन टेलोफेज स्टेज, the last stage of karyokinesis appear here। तो इस लास्ट स्टेज टिलोफेज में क्या होता है, टिलोफेज के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। टिलोफेज की जो कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द प्रोफेज। प्रोफेज में जो स्टेज होती है, प्रोफेज में जो कैरेक्टरिस्टिक नजर आते हैं, उसके कंप्लीटली अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक टिलोफेज में नजर आती है। इसीलिए प्रोफेज और टिलोफेज आर द एंटागोनिस्टिक फेज और अपोजिट टू ईच अदर। ओके, देयर जनरल कैरेक्टरिस्टिक इज अपोजिट टू ईच अदर। जैसे कि प्रोफेज में आपने देखा कि
that is disappearance of nucleus and nuclear membrane occur, but here in telophase the reappearance of nuclear membrane, it occurs due to the endoplasmic reticulum, as well as the nucleolus remain reappear here, nucleolus start to reappear here. तो टेलोफेज की जनरल कैरेक्टरिस्टिक है रीअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज न्यूक्लियोलस, जो प्रोफेज के अपोजिट है. देन सेकेंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक, द क्रोमोसोम. प्रोफेज में आपको पता है क्रोमोसोम कंडेंसेशन स्टार्ट, क्रोमोसोम दे गेट कंडेंस एंड बिकम थिक इन प्रोफेज, okay, and attain its highest thickness in metaphase stage. टेलोफेज में क्या होता है, द क्रोमोसोम दे स्टार्ट टू डीकंडेंस, क्रोमोसोम ये डीकंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं. ओके, देन प्रोफेज में आपने देखा कि सेंट्रोसोम्स ये सेपरेट हो जाते हैं अपोजिट पोल पर, रीअपियर रहते हैं. ओके, मगर आफ्टर टेलोफेज दिस सेंट्रोसोम्स दे स्टार्ट टू डिसअपियर. तो ये प्रोफेज और टेलोफेज इनकी जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है ये एक दूसरे के एग्जैक्टली अपोजिट है. आफ्टर टेलोफेज द नेक्स्ट स्टेज इज दैट इज द वी कैन से साइटोकाइनेसिस. ये साइटोकाइनेसिस में दिस टेलोफेजिक सेल इट इंटर इनटू द साइटोकाइनेसिस. Cytokinesis, it is the equal distribution of cytoplasm due to the division of the cell that complete here in cytokinesis. तो इस साइटोकाइनेसिस को हम प्लांट्स और एनिमल के साइटोकाइनेसिस अलग से डिस्कस करेंगे. ओके, नाउ आफ्टर साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस के बाद क्या होता है, आफ्टर साइटोकाइनेसिस दिस वन इज द न्यूक्लियस, इसे हम डॉटर न्यूक्लियस कहेंगे. दिस टू डॉटर न्यूक्लियाई they appear in telophase and each of these nucleus it contain the chromosome 4, each contain the 4 chromosomes, as well as what is their DNA content. The DNA content of this cell is again it becomes 2C, यहाँ का DNA content 2C हो जाता है. Okay, or then next one, how many number of chromatids present here, the number of chromatid that is again the 4. तो एक डॉटर न्यूक्लियस में डीएनए कंटेंट अगेन इट बिकम्स 2C, हमने 2C से स्टार्ट किया था. देन क्रोमोसोम नंबर बिकम्स 4, हमने क्रोमोसोम नंबर 4 से ही स्टार्ट किया था. और द नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स ऑफ दिस डॉटर न्यूक्लियस इज द 4. तो हमने जो डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर जिस सेल को हमने लिया था इस माइटोसिस की स्टडी के लिए, उसका डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर 2n इज इक्वल टू 4 था. आफ्टर साइटोकाइनेसिस it remain the same, that is 4, chromosome number remains same, that is 4. The after mitosis, completion of the mitosis, the DNA content becomes 2C after the completion of the mitosis, and number of chromatid is 4 after completion of the mitosis as their parent cell. Okay, so इस karyokinesis में होता क्या है, in case of animal cell and plant cell there are two different types of cytokinesis separately seen in animal cell and plant cell. ओके, पहले एनिमल सेल को हम डिस्कस करेंगे. अब देखिए साइटोकाइनेसिस में जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है आफ्टर द रीअपियरेंस ऑफ द डॉटर न्यूक्लियाई इन अपोजिट पोल, नाउ these two cell means these two nuclei they get separated by the splitting of the cell. इस दोनों सेल की स्प्लिटिंग हो जाती है और यहाँ पर साइटोकाइनेसिस का यहाँ कंप्लीशन हो जाता है और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल and cytoplasmic content occur in the daughter cell, and these two daughter cell after the cell division, after the completion of the cell division, they directly enter into the G1 phase of the mitosis. बच्चों इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, इसे याद रखिए. After completion of the mitosis, these daughter cells enter in the G1 phase. If they lose the dividing capacity, then from this G1 they enter into the G0 phase. अगर इनमें dividing capacity नहीं होती है तो ये G0 phase, that is quiescent phase में ये enter हो जाती है, that is the inactive phase, but it is metabolically active. ये आपको पता है. Okay, totipotentially it is inactive one, इनमें dividing capacity नहीं है. ओके अगर होती है तो ये डायरेक्टली इंटरफेस के बाद G1S और G2 में इंटर हो जाएगी फॉर परफॉर्मिंग फर्दर माइटोसिस सेल डिवीजन बाय दीज टू डॉटर सेल.
देन अब साइटोकाइनेसिस दो टाइप्स के हम स्टडी करने वाले हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल, इन दोनों के लिए सेपरेटली। ओके, सबसे पहले एनिमल सेल। द द साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल इज नोन एज द क्लीवेज, इसे हम क्लीवेज कहते हैं। इस क्लीवेज में होता क्या है, ड्यूरिंग दिस क्लीवेज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन दे गेट पूल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दे पूल टूवर्ड्स द मिडल ऑफ द सेल, सेल के मिडल में। ओके, इन बिटवीन द डॉटर न्यूक्लियाई ऑफ द सेल, इस डॉटर न्यूक्लियाई के मिडल में ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पूल किया जाता है बाय द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। ओके, और इसे जब पूल किया जाता है, देन इट फॉर्म द फरोज, ए डिप्रेस कंस्ट्रिक्शन इज सीन on the plasma membrane, it is known as the cleavage furrows. When these two plasma, when the ends of this plasma membrane they get pulled towards in the middle of the daughter nuclei, then they becomes fuse, and these two daughter cell get separated after the fusion of these two ends of the plasma membrane. This constriction or this cleavage furrow, it is formed due to the contractile protein, that is microfilament like actin. Okay, actin and myosin, they start to contract and form the cleavage furrow of this plasma membrane. Therefore, these two daughter nuclei, in between these two daughter nuclei, the cleavage complete and fusion of plasma membrane separate the daughter cells. तो इसे हम क्लीवेज कहते हैं, एंड दिस क्लीवेज इट ऑकर इन द that is animal cell, ये animal cell में होता है। okay, what about the mitos cytokinesis in the plant cell? okay, इसमें इसमें याद रखिए, यहाँ पर जो साइटोकाइनेसिस हो रहा है, ये कहाँ से कहाँ हो रहा है, फ्रॉम पेरीफेरी टूवर्ड्स द सेंटर, फ्रॉम पेरीफेरी टूवर्ड्स द सेंटर। तो इस तरह के साइटोकाइनेसिस को हम कहते हैं, ओके, आपको पता है इसे हम सेंट्री पेटल कहते हैं। जब पेरिफेरल फोर्स सेंटर की ओर एक्ट होता है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, उसे आप क्या कहते हो, दैट इज नोन एज सेंट्रीपेटल फोर्स। ओके, द फोर्स दैट एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडाई ऑफ दिस सर्कुलर पाथ, दैट इज नोन एज द सेंट्रीपेटल। तो यहाँ पर ये जो साइटोकाइनेसिस है एनिमल सेल में, इसे हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज द centripetal cytokinesis. It is seen in the animal cell. Then what about plant cell? The cytokinesis in plant cell is known as the centrifugal cytokinesis. Okay, तो ये centrifugal cytokinesis कैसे होता है, उसे हमें डिस्कस करना होगा, ठीक है। So let us discuss about that one. तो ये कैसे होता है, see here. Now in this figure, ये फिगर में आपको नजर आ रहा है कि किस तरह से कौन दैट इज क्लीवेज फरो यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। ओके, यू कैन सी हियर द हाउ डज द क्लीवेज फरो फॉर्म हियर इन बिटवीन दिस टू डॉटर सेल, ओके, इन एनिमल सेल ड्यूरिंग द माइटोसिस। देन नेक्स्ट वन इज द साइटोकाइनेसिस इन द प्लांट सेल। इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, इसे याद रखना। नाउ क्या होता है, सी हियर, after the formation of the daughter nuclei in opposite pole, then the Golgi bodies, they release it release their, that is the Golgi bodies release their vesicles in the middle of the cell in between these two daughter nuclei. Okay, and these vesicles we can call this vesicle as the phragmoplast. ये क्वेश्चन पूछा गया है, phragmoplast, it is the group of endoplasmic reticulum and Golgi bodies that release their secretion in the middle of the cell in between the daughter nuclei, that is known as the, इसी को हम कहते हैं phragmoplast. And these phragmoplasts, they start to extend from center towards the cell wall. ये सेंटर से या मिडल से पेरिफेरल में ये एक्सटेंड होते हैं, एंड दे फॉर्म ए डिसकंटिन्यूअस लाइन दैट इज नोन एज द सेल प्लेट। ये डिसकंटिन्यूअस लाइन फॉर्म करते हैं, और इस डिसकंटिन्यूअस लाइन को हम फ्रैग्मोप्लास्ट कहते हैं, इसे सेल प्लेट कहा जाता है। एंड देन आफ्टर these vesicles, this dividing cell, daughter cell, they start to deposit the, that is the fibers of the cellulose के fibers यहाँ deposit होना start होते हैं, and in this way this discontinuous cell plate, it becomes completely
it becomes completely arranged and therefore that is known as the primary cell wall. ओके और ये जो सेल प्लेट होती है प्राइमरी सेल वॉल, ये इस सेल प्लेट के लेफ्ट और राइट में डिपॉजिट होना शुरू होते हैं। सेलुलोज फाइबर्स ये लेफ्ट और राइट में डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं और जो ये मिडल सेल प्लेट लाइनिंग है इट बिकम्स द मिडल लाइन। ओके तो ये मिडल लाइन या फिर दैट इज वी कैन से द मिडल लैमेला, ये जो सेल प्लेट फॉर्म होती है इट बिकम्स द मिडल लैमेला आफ्टर डिपोजिशन ऑफ द सेलुलोज फाइबर। सेलुलोज फाइबर जो डिपॉजिट होते हैं, इस सेलुलोज फाइबर ये पेरीफेरी इस तरह से डिपॉजिट होते हैं और इन दोनों सेलुलोज फाइबर्स के बीच में जो सेल प्लेट थी वो कंप्लीट, जब ये कंप्लीट ये डिसकंटिन्यूअस लाइन जब कंप्लीट कंटिन्यूअस हो जाती है तो सेल प्लेट को हम मिडल लैमेला कहते हैं और इसके पेरीफेरी जो सेलुलोज फाइबर अटैच हो गए हैं तो ये फॉर्म करते हैं प्राइमरी सेल वॉल। इट फॉर्म द प्राइमरी सेल। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द दिस प्राइमरी सेल वॉल, these daughter nuclei they now get separated, these daughter nuclei they now get separated कहाँ पर, they get separated in, ओके म्यूट रखिए अपने माइक सभी। Okay. These two daughter nuclei get separated in their respective cell after the cell wall formation. अब ये daughter nuclei ये दो daughter cell में separate हो गए हैं और यहाँ इस तरह से यहाँ पर जो cell wall form हो रही है ये कहाँ से कहाँ किस direction में हो रही है, from middle towards the periphery of the cell wall। ये middle से ये periphery हो रही है। ओके सो इसे हम कहते हैं that is centrifugal cytokinesis, and centrifugal cytokinesis it occur in the plant cell mitosis। plant cell के mitosis में centripetal mitosis होती है, सॉरी centrifugal mitosis, सॉरी centrifugal cytokinesis होती है in the mitosis of the प्लांट सेल। तो दोनों याद रखिए। ओके एनिमल सेल में सेंट्रीपेटल साइटोकाइनेसिस है, माइटोसिस के समय होती है लास्ट में, और प्लांट सेल में सेंट्रीफ्यूगल साइटोकाइनेसिस होती है। ये दोनों पॉइंट याद रखिए। ओके सो यहाँ पर ये जो माइटोसिस है ये कंप्लीट होता है। माइटोसिस का जो सिग्निफिकेंस है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस? माइटोसिस इट टेकिंग प्लेस फॉर द वर्टिकल ग्रोथ और द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द बॉडी। Okay, primary growth means increase in number of the cell and biomass, that is known as the primary growth, and this is carried out by the mitosis. Okay, second one, in some cases in unicellular organism this mitosis cell division it becomes there, that is the reproduction type of the reproduction. In case of higher animals like plant, means in case of multicellular organism the repairing and regeneration of the body part it taking place ड्यू टू द माइटोसिस। जब हमें कोई इंजरी हो जाती है तो उस जगह का जो डेड सेल्स है वो न्यू सेल से रिप्लेस होते हैं। द वेयरिंग एंड टेयरिंग ऑफ द सेल इट इज रिप्लेस्ड बाय द न्यू सेल बाय द माइटोसिस। ये माइटोसिस के द्वारा न्यू सेल फॉर्म होते हैं जो हमारे बॉडी को रिपेयर करते हैं, मेंटेन रखते हैं। बॉडी के जो डेड टिश्यूज है वो न्यू सेल से रिप्लेस होते हैं। सो ये माइटोसिस है। ओके इन केस ऑफ मल्टीसेल्युलर algae and fungus, their the mitotic division it results in their growth, इनके ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इन केस ऑफ मेनी प्लांट्स in lower plants and some lower animals the mitosis division is required for the formation of the gametes, as well as mitosis division is required for the formation of the asexual spores as well. Okay then एक बात है आपको शायद पता होगा कि चैप्टर नंबर 1 में लिविंग वर्ल्ड में आपने देखा था दैट इज पार्थिनोजेनेसिस। ओके सो ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हैप्लॉइड होते हैं और उनमें कंटिन्यूअस उनकी बॉडी में जो गैमेट प्रोड्यूस होते हैं वो भी कैसे होते हैं, वो भी दैट इज माइटोसिस डिवीजन के द्वारा होते हैं। जैसे कि कॉलोनीज ऑफ द हनी बी, हनी बी की कॉलोनी में 3 तरह के इंडिविजुअल्स होते हैं। एक होती है क्वीन जो डिप्लॉइड होती है और जो मियोसिस डिवीजन में जाकर गैमेट फॉर्म करती है। ओके गैमेट फॉर्म करती है, हैप्लॉइड गैमेट्स, ये आपको पता है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन, इसके बाद जो वर्कर्स होते हैं, यू नो द वर्कर्स, जो वर्कर्स होते हैं दैट वर्कर्स दे आर
दे आर डिप्लॉयड बट दे आर नॉट फर्टाइल। वर्कर जो है वो डिप्लॉयड होते हैं मगर दे आर नॉट फर्टाइल, और ये फीमेल होते हैं बट दे आर नॉट एबल टू सिंथेसाइज द गैमेट और प्रोड्यूस द गैमेट। और जो न्यू ये जो हैप्लॉइड सेल बनते हैं, आपको पता है जो हैप्लॉइड सेल बनते हैं, दैट इज क्वीन के द्वारा जो हैप्लॉइड सेल बनते हैं मियोसिस के बाद, इनमें से कुछ सेल जो होते हैं दे फॉर्म द हैप्लॉइड ड्रोन दैट इज द मेल। जो मेल फॉर्म होता है, मेल हनी भी जो फॉर्म होते हैं वो दैट इज हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर होता है उनके सेल में, और उस हैप्लॉइड मेल को हम ड्रोन कहते हैं। एंड दिस ड्रोन, इस ड्रोन के भीतर जो इनकी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है, वो हर एक सेल हैप्लॉइड होते हैं, वो कंटिन्यूअस माइटोसिस डिवीजन के द्वारा होती है। और साथ ही साथ इस ड्रोन के द्वारा जो मेल गैमेट प्रोड्यूस किए जाते हैं वो माइटोसिस डिवीजन के द्वारा ही प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। सो दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ द माइटोसिस। ओके ओके, मियोसिस और माइटोसिस। ओके ठीक है बेटा वैष्णव, अभी हम मियोसिस डिस्कस करने के बाद हम माइटोसिस और मियोसिस का डिफरेंस आपको बताएंगे, ठीक है। मियोसिस कंप्लीट होने के बाद माइटोसिस और मियोसिस का डिफरेंस हम आपको बताएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर माइटोसिस कंप्लीट होता है, टेक द शॉर्ट ब्रेक, फिर बाद में इसके बाद हम मियोसिस स्टडी करेंगे, ठीक है। ओके टेक द ब्रेक नाउ, एंड आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक वी विल डिस्कस अबाउट द मियोसिस। ओके थोड़ी सर देर शेख बाद। सर ऑफलाइन भी लेने वाले थे। कितने बजे समय क्या है बताइए। 9